Hello students, how are you? My name is Birbal Sharma, lecturer physics, PCCP, Resonance, Kota. So today we will start the fifth lecture of heat and calorimetry. तो आज का टॉपिक है the mode of transfer of heat. हम पहले कर चुके हैं कंडक्शन एंड कन्वेक्शन. आज स्टार्ट करेंगे रेडिएशन. तो रेडिएशन the method of transfer of heat. It is the method of transfer of heat without the need of medium. It is the method of transfer of heat without the need of medium. In this process, the intervening medium will not be affected by the heat. In this process, the intervening medium will not heated. When intervening medium, when there is no need of medium, it means it can travel through vacuum also. Medium पर चल ही सकता है. अगर medium में move कर रहा है, तो it's not affected. Okay, it's the radiation. Now, properties of radiation. According to Maxwell, radiation is electromagnetic waves. According to Maxwell, radiation is radiant energy. Energy is electromagnetic. Waves. Number 2, it will not affect the intervening medium. ये ऐसे कह सकते हैं, it can travel through वैक्यूम आल्सो. वैक्यूम से भी ट्रैवल कर सकती है, मीडियम पे तो करेगी. नंबर 3, इट विल नॉट अफेक्ट द इंटरवेनिंग मीडियम. At lower temperature, the amount of radiant energy will be less at lower temperature. 4th, at lower temperature, radiant energy will be less. Energy will be less. But at higher temperature, it will be more. Think about this. When we heat the object, then first of all, it appears red. It appears red means at lower temperature it emits lower wavelength. Lower temperature, lower wavelength. At lower temperature, the body emits higher wavelength. That's right. Higher wavelength. At higher temperature, the body emits greater wavelength. Means the wavelength of the energy will be more in comparison to that lower temperature. 6, it obeys the inverse square law. Means intensity is directly proportional to distance of the point from the source. 1 more r square. It is important. Number 7, like light, radiant energy
absorb, etc. Just like light. Okay, so these are the points, important points of radiation. Okay. Now the next point is behavior of radiant energy at the interface of two media. जब radiant energy interface पर fall होती है तो what will happen? Suppose the interface in the first medium, here the second medium, it is falling in this way. Incident energy, incident radiant incident energy. Okay, suppose it is amount is Q, so some is reflected. It is QR is reflected. Some is transmitted. And rest is absorbed. It is divided into three parts. Some is reflected, some is that incident energy, it is reflected, it is absorbed, it is transmitted. So we can write, if incident energy is Q, then some part is reflected, that is QR. So we can write it. What is the value of Q? Total incident Q will be QR plus QT plus QA. Is it clear? अब देखिए मैं डिवाइड कर सकता हूँ ऑन डिवाइडिंग बाय Q, तो इट इज QR अपॉन Q प्लस QT अपॉन Q प्लस QA अपॉन Q, दैट्स 1. चलिए इस फैक्टर को लिखता हूँ मैं, दैट इज R. इस फैक्टर को लिखता हूँ P और इस फैक्टर को लिखता हूँ A, दैट्स 1. इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. वी विल एक्सप्लेन ईच स्टेप, व्हाट इज R, व्हाट इज P and what is A. So first of all, number 1, coefficient of reflection, that is R. It is the ratio of QR divided by Q. तो मैं लिख सकता हूँ it is the ratio of reflected energy and incident energy. Clear? It has no limit. If P is equals to A is equals to 0, then what is the value of? मतलब no energy is incident, absorbed and transmitted. Then what is the value of R? QR upon Q, that is equals to 1. It means QR is Q. Total incident energy is completely reflected, then it is known as perfect reflector. Is it clear? Total incident energy is completely reflected, then this body is known as perfect reflector. Perfect, nothing is absorbed, nothing is transmitted. It is perfect reflector. It is small r, coefficient of reflection. अब second point देखिए, if second point
coefficient of transmission, that's T, is the ratio, T is the ratio of QT by ratio of transmitted energy and the incident energy is known as coefficient of transmission. If R is equals to A is equals to 0, then what the value of T? T is equals to 1, means QT by Q is equals to 1, or we can say QT is equals to QA, QT is equal to Q. Total incident energy is completely transmitted, refracted, that is known as perfect refractor or perfect transmitter. Okay, third point देखिए, coefficient of emissive power, emission, that's A. But what is coefficient of emission? It is QA divided by Q. It's the ratio of absorbed energy and the incident energy known as coefficient of emission. If R is equals to P is equals to 0, then what is the value of A? 1, means QA by Q is equals to 1. मैं कह सकता हूँ QA is equals to Q. Total incident energy is completely absorbed, and it is known as perfect emitter. Sorry. Okay, perfect absorber. Think of absorption. Absorption. A. Not emission. Absorption. It is also known as black body. If total incident energy completely absorbed, then it is known as black body. So how you will define black body? If total incident energy is completely absorbed, then it is known as perfect absorber or black body. परफेक्ट तो वैसे कुछ भी पॉसिबल है ही नहीं, कुछ भी पॉसिबल नहीं है. ब्लैक प्लैटिनम is assumed black body. एक और है ब्लैक बॉडी एग्जांपल में, फेरीज ब्लैक बॉडी. फेरी इज द नेम ऑफ ए साइंटिस्ट. क्या किया इन्होंने, देखिए इन्होंने स्टारफिश वेसल लिया, ये वाला डबल वॉल का, और बहुत स्मॉल ओपनिंग थी, बहुत स्मॉल ओपनिंग, ये वाली डबल वॉल से. ओके, ये डबल वॉल ओपनिंग बहुत छोटा है इसका, बट इन फ्रंट ओपनिंग देयर इज अ कोन, और अंदर से है ये ब्लैक, ये पोर्शन ब्लैक, फ्रॉम इनसाइड इज ब्लैक पॉलिश. ओके, अब देखिए यहां से एनर्जी फॉल होती है, ये वाली एनर्जी इस ओपनिंग से फॉल होती है. एट दैट पॉइंट इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. सम इज ट्रांसमिटेड, तो वो यहां एब्जॉर्ब होगी, सम इज एब्जॉर्ब्ड एंड रेस्ट इज रिफ्लेक्टेड. और जब यहां फॉल होगी तो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. सम इज ट्रांसमिटेड, सम इज एब्जॉर्ब्ड, सम इज रिफ्लेक्टेड. चलिए इधर होगी. अब यहां से भी वही 3 पार्ट होंगे. ये तब तक ऐसा चलता रहेगा जब तक ये कंप्लीटली एब्जॉर्ब नहीं हो जाए. द मेन पॉइंट इज कोन, जो रे इस पर फॉल होगी, केवल इस कोन पर फॉल होगी, इस पॉइंट पर, वही आगे जा सकती है, अदरवाइज इट विल नॉट गो बैक. तो मोस्ट ऑफ द इंसिडेंट एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड. वी कैन अज्यूम इट इज ए ब्लैक बॉडी. It is formed by Ferry, so it is known as Ferry's black body. Is it clear? If Ferry's black body. अब लेते हैं
emissive power, some definitions. Emissive power, या सबसे पहले एब्जॉर्प्शन पावर लेंगे. एब्जॉर्प्शन पावर और एब्जॉर्प्टिव पावर. ए अभी हमने डिफाइन किया था. The ratio, it is the ratio of absorbed radiation, absorbed energy and incident energy. Incident energy, okay, that is A is equals to Q absorbed divided by Q. It has no unit, okay. जितनी भी फॉल हो रही है और QA is absorbed, Q is incident energy. The ratio is known as the absorption power. Number 1. Number 2 देखिए emissive power. ये थोड़ा डिफरेंट है. एनर्जी radiated per unit time per unit area by a body is known as emissive power. Noted by E of ब्रैकेट लिख सकता हूं from 0 to infinite wavelength. किसी भी वेवलेंथ का टोटल जो भी है that is denoted by E. Its unit is, फिर से देखिए एनर्जी मींस जूल, रेडिएटेड पर यूनिट टाइम और पर यूनिट एरिया मींस मीटर स्क्वायर. यू नो वेरी वेल जूल पर सेकंड नोन एज watt per meter square. It is the emissive power denoted by small e. Next आता है spectral emissive power. Emissive power. Okay, spectral emissive power. अब देखिए यहाँ लिया था मैंने from 0 to इनफाइनाइट है. अब यहां फिक्स होगा. फॉर एग्जांपल रेडिएशन में विजिबल कितना है, यूवी कितना है, इंफ्रारेड कितना है, वेवलेंथ फिक्स. तो एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, एक्चुअली इट इज नॉर्मल टू द सरफेस. ओके, पर यूनिट एरिया, per unit time, per unit area of unit wavelength of range lambda to lambda plus d lambda. इस रेंज के बीच में कितना एमिट कर रही है is known as spectral emissive power. It is denoted by E lambda. E lambda. अब देखिए, you know that is what the emissive power. Simply emissive power denoted by small e. So we can write it. It is for unit wavelength. For delta wavelength, it is this. If the integrate is from 0 to infinity, from 0 to infinity, it becomes E. Emissive power. Okay, it is emissive power. अब आता है emissivity. तो emissivity
What is emissivity? It is the ratio of emissive power of a body at temperature T to the emissive power of black body at same temperature. याद रखिए, for black body it is written by capital letter. So emissivity is written as, that is emissive power. Emissive power means E divided by capital E. It is for black body at temperature T. It is for any body at temperature, that is T. In the ratio there will be low. याद रखना, the absorption power for black body is written as capital A. That will be how much? 1. It's the emissivity. Now the Kirchhoff's law. Kirchhoff's law. Kirchhoff's law. At constant temperature, yeah, ऐसे कह सकते हैं, the ratio of that is emissive power of a body and absorption power of the body remains constant. Remains constant means E divided by A is equal to constant, and it will be equal to emissive power of black body, because for black body A is equal to 1 and E is written as E will be capital E, so will be equal to capital E. What does it mean? इसका मतलब क्या है? The ratio of emissive power and absorption power remains constant and it will be equal to the emissive power of black body at same temperature. इसका मतलब ये है, क्या मतलब है? It means okay, good reflector या good emitter will be good absorber also, and bad emitter will be bad absorber. अब इसका एक एग्जांपल बताता हूं मैं आपको. एग्जांपल देखिए, यू नो कप ऑफ टी. एक कप का एक पीस ले रहे हैं आप, चाइना के लिए पीस है. ओके, इसको हीट अप करें, बर्नर पर रख के हीट अप करें, इतना हीट अप करें कि रेड हॉट हो जाए. क्या हो जाए? रेड हॉट. इससे पहले हमें ब्लैक स्पॉट बनाना है इस पर, ब्लैक
स्पॉट। ओके, अब इसको बर्नर पर रखें, कितना गर्म करें, रेड हॉट हो जाए, रेड हॉट। अब ऑब्जर्व इट, रेड हॉट, हीट अप कर रहे थे, इतना हीट अप किया कि रेड हॉट हो जाए, रेड दिखने लगे। ओके, अब देखिए इसको बर्नर बंद कर दीजिए, अब डार्क रूम में ले जाइए जहां अंधेरा होगा। अब इसको ऑब्जर्व कीजिए, जो ब्लैक पॉइंट था वो ज्यादा चमकता हुआ दिखेगा इन कंपैरिजन टू द अदर पोर्शन। व्हाट इज द रीजन? जब मैं हीट अप कर रहा था तो ब्लैक ने सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब किया था, लेकिन जब कंपेयर रूम पे ले गया, जब एमिट कर रहा है तो यही सबसे ज्यादा एमिट कर रहा है, इसलिए मुझे ज्यादा चमकता हुआ दिख रहा है। तो जब ये ब्लैक ने पहले एब्जॉर्ब भी ज्यादा किया था, गुड एब्जॉर्बर था, लेकिन जब ये रेडिएट कर रहा है तो बाकी पोर्शन से रेडिएट भी ज्यादा ही कर रहा है, तो गुड रिफ्लेक्ट, गुड एमिटर है, तो ये गुड एब्जॉर्बर भी है। जब इसको हीट अप कर रहा था ज्यादा एब्जॉर्ब की थी, बाकी पोर्शन से ज्यादा एब्जॉर्ब की थी। फिर द एग्जांपल ऑफ दैट इज दिस लॉ। इसका मतलब यही है, गुड एमिटर विल बी गुड एब्जॉर्बर एंड बैड एमिटर विल बी बैड एब्जॉर्बर। इन कंपैरिजन टू दिस पोर्शन इज बैड एब्जॉर्बर इन कंपैरिजन टू दिस ब्लैक स्पॉट। तो इसने ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब की थी जब मैं हीट अप कर रहा था, और जब मैं रूम में जाके डार्क रूम में देख रहा हूं तो यही सबसे ज्यादा एमिट कर रहा है, गुड एमिटर भी है। ओके, चलिए नेक्स्ट, प्रीवोस्ट एक्सचेंज थ्योरी। प्रीवोस्ट एक्सचेंज थ्योरी। ओके, when two objects of different temperature are placed in touch, then what will happen? Heat will flow from higher temperature body to the lower temperature body. कब तक flow होगा ये? When their temperature becomes constant. After that, what will happen? Constant temperature हो गया, same temperature हो गया. After that, the flow of heat must stop. लेकिन ऐसा नहीं होगा. According to Prevost, every object at every temperature emits heat, emits radiation and also absorb the radiation at any temperature, lower हो ये। ऐसे तो हम ही कहते हैं कि हमेशा हायर टेम्परेचर से हीट किधर जाती है, लोअर टेम्परेचर की तरफ जाती है। बट अकॉर्डिंग टू प्रीवोस्ट, ओके, every object at every temperature emits heat and absorb heat, emit भी करता है और absorb भी करता है। अब क्या होगा, देखिए, if emitted heat is more than the absorbed heat, then what will happen? Emit ज्यादा कर रहा है, absorb कम कर रहा है, it means then its temperature will go down. Emit ज्यादा कर रहा है तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, सीधा सीधा। भाई absorb कम कर रहा है और absorb कम कर रहा है और emit ज्यादा कर रहा है। अब आगे देखिए, if emitted heat is less than the absorbed heat, then its temperature will go up, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। ओके, एमिट कम कर रहा है, absorb ज्यादा कर रहा है। इफ emitted heat is equal to absorbed heat, then its temperature remains constant. यही करते हैं मैन, two objects at higher temperature and lower temperature, different temperature, they are placed in touch. तो क्या होगा, एनर्जी विल ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर।
जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा उस टाइम भी ये एनर्जी एमिट भी करेगा और एब्जॉर्ब भी करेगा, बट एट दैट टाइम एमिटेड एनर्जी एंड एब्जॉर्ब एनर्जी विल बी इक्वल, सो टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ऑफ द बोथ द बॉडीज। क्लियर? जितना ले रहा है उतना दे रहा है, तो टेम्परेचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इट इज द प्रीवोस्ट एक्सचेंज थ्योरी। नाउ स्टीफन्स लॉ, फोर्थ पावर लॉ। स्टीफन्स फोर्थ पावर लॉ। ओके, ये है एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया बाय ए बॉडी will be directly proportional to the fourth power of the absolute temperature of the body. Energy radiated per unit time per unit area per unit time per unit area, okay, by a black body के लिए energy radiated per unit time per unit area by a black body will be directly proportional to fourth power of absolute temperature of that black body. Means E, black body के लिए इसलिए capital E is directly proportional to T to the power 4. T is absolute temperature of black body. Absolute means in Kelvin. Black body means E is one constant, sigma T to the power 4. Sigma is constant known as Stefan's constant. Stefan's constant. Its value is sigma is equal to 5.67 into 10 raised to the power minus 8. यूनिट में यहां से फाइंड कर सकता हूं क्या आएगा सिग्मा का, देखिए सिग्मा इज इक्वल टू E अपॉन D टू द पावर 4। E का मुझे मालूम है एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया जूल पर सेकंड into meter square is the unit of E into Kelvin to the power 4। ऐसा भी कह सकता हूँ watt per meter square into Kelvin to the power is the unit of sigma, constant। अब सोच के देखिए, हमने लिखा था भाई प्रीवोस्ट में लिखा था कि every object at every temperature emits energy and radiates energy। तो ये ब्लैक बॉडी है, ये तो एमिटेड है, नेट एमिटेड है, तो कुछ एब्जॉर्ब भी करना होगा ना। थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं इसको, देखिएगा इफ दिस ब्लैक बॉडी whose temperature is T is placed in a boundary of temperature T naught. Boundary is also black body. It is correct for black body. It is boundary. Black body, ये भी black है, और it is the black body. Its temperature is T naught, but T is greater than T naught. Then the net energy will be emitted. तो देखिए ये emit करेगा, ये भी तो emit करना होगा, जो फॉल होगी ब्लैक बॉडी पे। लेकिन जितनी एनर्जी इसमें फॉल होगी वो सारी की सारी क्या कर लेंगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। तो आई वांट द नेट एनर्जी। देखिए एनर्जी radiated per unit time per unit area by black body
by black body, that is suppose E1 sigma T to the power 4. अब जो बाउंड्री एमिट कर रही है दैट विल फॉर्म ब्लैक बॉडी, और ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन है द टोटल इंसिडेंट एनर्जी इज कंप्लीटली एब्सॉर्ब्ड नोन एज ब्लैक बॉडी. एनर्जी ओके emitted by the boundary, ये भी ब्लैक है. Okay, whose temperature is T naught will fall on the black body which is completely absorbed by the black body, which is completely absorbed by black body. So energy radiated, energy absorbed per unit time, per unit area by black body, that is E2 will be sigma T naught to the power 4. अब देखिए ब्लैक बॉडी ने ये तो एमिट किया, ये एब्सॉर्ब कर लिया. देखो व्हाट इज द नेट एनर्जी एब्सॉर्ब्ड, एनर्जी एब्सॉर्ब्ड, नेट एनर्जी एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी पर यूनिट टाइम, per unit area that is E is equal to, याद है E1 एमिट कर रहा था, इतनी एब्सॉर्ब कर लिया, तो what is E is equal to sigma T to the power 4 minus sigma T naught to the power 4, or we can say E is equal to sigma T to the power 4 minus T naught to the power 4. Is it clear? Okay? चलिए नेक्स्ट लेते हैं, अभी थोड़ा सा और लेते हैं आगे. If the energy radiated per unit time per unit area, net energy radiated if area, surface area of black body is capital A, then energy radiated by complete black body per unit time, that is known as rate of cooling. A, then energy radiated by black body, not per unit area, by black body per unit time, that is known as rate of cooling, that is R is equal to E into A. आगे देखिए what is R, E की वैल्यू मुझे मालूम है, that is A sigma T to the power 4 minus T naught to the power 4. Is it clear? Energy radiated per unit time per unit area, it is rate of cooling. ये है rate of cooling, energy radiated per unit time by the black body. अब देखिए energy radiated per in time by the black body in time T, that is Q is equal to R into, ये per unit time था, अब in time T that will be R into T. देखिए क्या आएगा, that is Q will be equal to R A sigma T into T naught to T to the power 4 minus T naught to the power the energy radiated per unit time per unit area. कर सकता हूँ ऐसा मैं, it is total energy radiated. अब एक क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन लिखिए
temperature of a body is that is 327 degrees Celsius, and temperature of surrounding is 27 degrees Celsius. 27 degrees Celsius. Find energy radiated per unit time, per unit area, per unit time, per unit area by the black body, this black body or Stefan's constant sigma is 5.67 into 10 raised to the power minus 8 watt per meter square, yeah, sigma into Kelvin to the power 4. It is given. So how you will solve? Again, you know very well, because that is E is equals to solution. E is equals to sigma T to the power 4 minus T naught to the power 4. It is given. What is T naught? 27 degrees Celsius. That will 27. You have to convert into Kelvin. Plus 273. That is how much in Kelvin? 300 Kelvin. And what is T? T is given 327 plus 273. That is how much? 600 Kelvin. Now, E will be equal to energy radiated per unit time, per unit area. Is given sigma is 5.67 into 10 raised to the power minus 8 into 600 to the power 4 minus 300 to the power 4. We can solve or not? So E will be equal to 5.67 into 10 raised to the power minus 8. ये कॉमन ले सकता हूँ, to the power 4 100 to the power 4 कर सकता हूँ या नहीं? कितना आएगा? देखा 10 raised to the power 2 to the power 4 कॉमन आएगा, that is 8. So to 10 raised to the power 8 into 6 to the power 4 minus 3 to the power 4. ये cancel. E will be equal to 5.67 और इसको सॉल्व कर सकता हूँ a plus b and a minus b. ये आएगा that is 6 plus 3 and 6 minus 3. ऐसे कर लीजिए. ये 6 square 6 to the power 2 4 कर सकता हूँ इसमें minus 3 square to the power 2. ये फॉर्मूला रखता हूँ a plus b and a minus b कर सकता हूँ. You can calculate or not? क्या आएगा देखिए 5.67 into ये आएगा 636 plus 9 and 36 minus 9. Is it clear? 3 square 36 minus 9 क्या आएगा? That is 5 plus 5.67 into ये होगा 45 into 9 जाएगा 3, that is 27. You can easily find joule या watt per meter square into Kelvin to the power into watt per meter square, energy radiated per unit time per unit area. You can check the calculation. 6 square, so 6 को 36 plus 9, 36 minus 9. You can do. इसको भी कर सकते हैं. वैसे ये easily ये चीज सॉल्व हो जाएगा. 36 minus that is okay, or 36 plus 9 that is 45. You can do. Okay, that is the solution of this question. इसके मान लेते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. क्या है? Okay, next lecture.